Does Mumbai have haunted places? अगर हम लोग हॉन्टिंग या हॉन्टेड कहते हैं तो वो क्या बेसिकली होता है? Her brother, he had passed away in a road accident or something. That night he was supposed to come home and go to a party or something like that. She sees this person in the room, worn that dress as well, and she's like, yeah, let's go करके. Then they get to know that he has met with an accident. क्या सबसे डरावनी स्टोरी क्या सुनी है? Seen this hand, कटा हुआ हाथ मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. Suddenly I wake up and this weird feeling कि मेरे पीछे कोई खड़ा है. 3 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस, मतलब कोई भी ऐसा भूत प्रेत में बिलीव करता है जो हॉन्टिंग फैनेटिक हो, ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, कहाँ विजिट करना चाहिए और क्यों? हाय एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सपर्ट टॉक विद मी भव्य देसाई. आज का एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्या आप में से कभी किसी को भी कुछ गोस्ट टाइप या कुछ हॉन्टिंग टाइप एक्सपीरियंस हुई है? अगर हुई है तो ये एपिसोड इंटरेस्टिंग है बिकॉज हमने बात की है आज फेमस ऑथर के हरी कुमार के साथ, जो इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के ऑथर हैं एंड बेस्ट सेलिंग बुक है, जिसमें काफ़ी सारी ऐसी स्टोरीज उन्होंने आज हमारे साथ शेयर की हैं जो बहुत ही पॉपुलर भी हैं, काफ़ी सारे हॉन्टेड प्लेसेस भी है और ये बहुत टॉप 3 टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के नाम में आती है. एंड ऑल्सो एक और बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टे ट्यून टिल द एंड बिकॉज एंड में उन्होंने अपने पॉडकास्ट के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक दिया है जो शायद आप सुन के काफ़ी सरप्राइज हो जाएंगे, जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. सो दैट्स व्हाट, लॉट्स ऑफ स्टोरीज, लॉट्स ऑफ गूसबम्स, काफ़ी सारी वुड यू कॉल स्पाइन चिलिंग टेल्स हैं जो उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस की हैं एंड ऑल्सो उन्होंने फर्स्ट हैंड सुनी भी है लोगों से जो उन्होंने स्टोरीज उनके साथ में शेयर की है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड है. ऑफकोर्स हमारा काम अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिए. ऑडियो पॉडकास्ट पसंद करते हैं आप तो यहाँ पे नीचे ऑडियो पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म्स में भी हमारा काम अवेलेबल है. इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, see you in the next one. So, hi Hari and welcome back to Expert Talk with Bhavya Desai. काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं ये कॉन्वर्सेशन के लिए बिकॉज लास्ट टाइम हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात की थी एंड उसमें से वन ऑफ द थिंग्स वाज ऑब्वियसली हॉन्टेड प्लेसेस एंड हॉन्टिंग्स. सो अनफॉर्चुनेटली वो टाइम पे हम लोग इतना उसके बारे में बात नहीं कर पाए. So that's why this time I really wanted to focus on those things because you obviously have a bestseller as well, which is the most haunted places. India's most haunted places as well. I've of course read that, so उसके लिए भी मेरे पास काफ़ी सारे questions भी है, मेरे दिमाग में काफ़ी सारे thoughts है जब उसको भी मैं पढ़ रहा था. So welcome firstly and thank you for having me here and thank you for calling me again. Last time was a different experience because we were talking about a different kind of right. supernatural phenomena / spiritual phenomena. This time we will be talking about a lot of other things as well. Right. तो let's see कहाँ जाता है conversation. हाँ, जितना हम बात कर सकते हैं बात करेंगे. मुझे नहीं पता क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो कि मतलब कभी खत्म ही नहीं होता है. Got your point. Yeah. जितना आप सोचोगे right. वो उससे भी ज़्यादा इन्फिनिट लेवल पे चला जाता रहेगा. Got your point. Okay. So, मतलब फर्स्ट अप मतलब जस्ट बेस थोड़ा सेट करने के लिए मुझे एक आइडिया चाहिए था कि जब अगर हम लोग हॉन्टिंग या हॉन्टेड कहते हैं तो वो क्या बेसिकली होता है? हॉन्टेड इज व्हाट, कि अगर कहीं पे कोई एंटिटी विजिट करता रहता है या करती रहती है, दैट एंटिटी इज हॉन्टिंग दैट प्लेस. Now the thing is that entity could even be a person. हम कहते हैं ना, why are you haunting my house? Right. बोलते हैं मजाक में. तो it could be a person, it could be an animal. Now the thing is अगर वो आदमी है या एनिमल, स्टॉकर है तो थोड़ा डर लगता है, बट अगर आदमी है, एनिमल है तो हम इतना ज़्यादा हम इग्नोर कर देते हैं. Right. But if it is something which we cannot perceive, which is beyond our limited परसेप्शन या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स के जो लिमिटेशंस है उसके बियॉन्ड है, उसके परे हैं, तब वो जो है एक सुपरनैचुरल के लेवल पे या पैरानॉर्मल के लेवल पे चला जाता है. सो वहाँ पे हमारा वो एक आ जाता है. तो व्हाट इज इट दैट इज हॉन्टिंग? इज इट अ स्पिरिट, भूत प्रेत? हम स्पिरिट जब हम बोलते हैं, हम यूजुअली जब एक सी अगेन ये सब डिफाइंड नहीं है.
ठीक है, स्पिरिट बोलते हैं तो एक स्पिरिट होता है वो क्रिश्चियन जो उसमें एक रिलीजन में एक स्पिरिट, द यूनिवर्सल स्पिरिट या होली स्पिरिट बोलते हैं, राइट। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक आत्मा की। आत्मा क्या है? इंसान, आप, मैं, हम एक जागरूक अवस्था में हैं अभी यहाँ पे, ठीक है, हम जागे हुए हैं। व्हाट इज कीपिंग अस अवेक? इट इज सम काइंड ऑफ एन एनर्जी, राइट? दैट एनर्जी इज योर आत्मा। अब उसको आप स्पिरिट बोल लो, एटलीस्ट इस एपिसोड के लिए लेट्स कॉल इट स्पिरिट या सोल या आत्मा, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, राइट। सो जो शरीर को जो सो अगेन कहते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा इज living forever. It switches from one body to another at the time of death. Right. It passes to another body, उसको जिंदा करती है, and then वही reincarnation वगैरह rebirth होता Right. रहता है according to our कर्म। अच्छे कर्म किए तो we go higher higher higher, बुरे कर्म किए तो we go lower lower lower। बहुत अजीब अजीब से इमेजेस आ रहे हैं नहीं कहूँगा क्योंकि फिर नॉन वेजिटेरियन लोगों की लड़ाई हो जाएगी, बट कुछ याद आया मुझे। एनीवे, सो द थिंग इज at one point when you have passed all your karma ke exams, then you attain nirvana or moksha and you become one with the parabrahman या जो भी है परमात्मा। तो मेरी आत्मा is myself. Understood. This body is not real, that body is not real. What is inside you, what is keeping you alive is the real deal. तो मतलब तो ये कहना सही रहेगा कि बेसिकली इवन जब भी हम कहते हैं ये आत्मा है या कोई चीज हॉन्टेड है या कोई जगह हॉन्टेड है, तो इज इट एनर्जी? अगेन आई एम कमिंग टू दैट। हाँ, आई एम कमिंग टू दैट। इसमें और भी दो चार चीजें हमें वी विल हैव टू टॉक अबाउट। सो दिस वॉट एवर इज कीपिंग यू अलाइव इज द आत्मा। नाउ हमारे पुराणों में या हमारे रिलीजन में ये कहा जाता है कि द बॉडी इफ इट डाइज एन एक्सीडेंटल डेथ और some kind of an unexpected sudden death, ठीक है, अपमृत्यु या जो भी उसको कहते हैं, उस वक्त जो आत्मा है, if it's not given cremation या proper funeral, because not everybody performs cremation, you know, even there are people who perform burial, right. So अगर proper funeral नहीं दिया गया, then that आत्मा it haunts like a प्रेतात्मा। हिंदूज में वो आई मीन क्या कहते हैं, हमारे एटलीस्ट हमारे उसमें तो 14 दिन के लिए द प्रेत सर्वाइव्स विद इन द हाउस होल्ड या विसिनिटी या वेरेवर इट हैज पास्ड अवे। सो उसको फ्यूनरल देने के बाद, पिंडदान वगैरह करने के बाद इट अटेन्स द मोक्ष। तो नहीं होता है, इट वी बिलीव दैट इट गोज टू पितृलोक, राइट, एंड देन एवरी ईयर यू हैव टू परफॉर्म द पिंडदान which is 1 day in पितृलोका। So अपना 360 days या 365 days is 1 day for the pitris, right. ठीक है, it's not 365 days, that's a Gregorian calculation. I don't know exactly what is the apna calculation, but it's 1 year for us is 1 day for the pitris, and right. and they don't have stomachs. So pitris are like they don't have stomachs, but they feel hungry. So they when they come, they assume the form of your crows. Okay. ठीक है, एंड तो जब उन लोग खा लेते हैं, भोग चढ़ाया होता है, तो कहते हैं कि वो आके खा के चले गए। सो दैट इज लाइक, एंड इवन इफ यू ऑब्जर्व क्रोज, दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे आर लाइक योर ओल्ड दादा दादी टाइप्स, यू नो, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। एक्चुअली क्रोज आर वेरी इंटेलिजेंट, although we don't like them mostly. So if a body isn't cremated or if it isn't given proper funeral rites or burial, then it is believed to haunt. अब इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अ मॉडर्न पर्सन लाइक मी एंड यू वुड, इफ एट ऑल वी वांट टू बिलीव इन दिस, मोस्ट पीपल दे वोंट, ठीक है, एंड इफ अ फ्यू ऑफ अस वांट टू बिलीव इन इट, देन वी माइट कंसिडर दैट दिस इज सम काइंड ऑफ एन एनर्जी। कोई ऊर्जा है, बॉडी से निकल गई है, अब वो इधर उधर है कहीं पे, ठीक है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, वो ये सोचते थे कि इट एक्चुअली इज द रियल पर्सन, राइट। समटाइम्स दे बिकम रेस्टलेस घोस्ट्स and they haunt these abandoned places, या जहाँ पे, क्योंकि मोस्टली जो डेथ्स होता था abandoned places में होते थे, या शमशान घाट आपके, even if you look at your Christians and Muslims, it's in the cemetery or your burial grounds. That's where all the haunted stories, you know, they take place, right. क्योंकि again कहीं ना कहीं एक psychological element भी है, क्योंकि when you're going there you know that a lot of people have passed away here, so उसका भी एक असर हो सकता है, especially when somebody has passed away very recently, because you, and to be honest, I have spoken to so many people who feel that they had
seen, okay, their loved ones after they had passed away. In fact, very recently somebody shared their experience with me, an aged lady. She told me that, I've had an incident. Since you write horror, I want to share something. People laugh at me, but this has happened. I said, yeah, tell me what happened to you. Because I don't say no. I don't give my comments, but I like to listen to people. And this woman, she tells me that her brother or brother-in-law, I don't remember exactly, he had passed away in a road accident or something. And that night he was supposed to come home and go to a party or something like that. So he had his suits and all ready at the room. And she didn't know about it. She thought that she didn't know about the accident. They were all waiting for him at the house. And then क्या कहते हैं, she sees this person in the room whose band is worn that dress as well, and she's like, yeah, let's go करके. And what happened? I think our this relative is here. I think let's go for the party. And then when everybody came back, nobody was here in the room. And then they get to know that he has met with an accident. And it was roughly, I think, the same time or before that when she saw this person. I mean, moments before the accident or something like that. The accident happened somewhere far away, not very far away, but in that city. So yeah, so that's, and similar incident I think has happened to somebody else I know, and this was like very long ago. A friend of mine, his Nanaji had passed away. Nanaji, and he was very close to his Nanaji. Funeral वगैरह हो गया. And I think it was during the funeral or something. There's in South we kind of हम अस्थियाँ बहाने रामेश्वरम वगैरह जाते हैं. So it was before that Rameshwaram wala phase, and we were all playing, and we were all children at that time, and this boy says, Nanaji is there on the armchair, because that's where he used to sit at that time of the night or evening. And then we all went there and saw कोई भी नहीं है. Obviously because he had passed away. Okay, so now again it could be because you are so close to that person, your mind is still coming to terms with that, and mind can play tricks on your eyes as well. That's a rational way of looking at it. The other way is to accept that yes, they had seen for a fleeting moment whatever spirit or urja or whatever was there that time, and that is kind of a haunting. Even if it is for a very small infinitesimal moment in time, but that is a haunting. Sometimes the haunting can happen for a long time. So it is believed that certain times, again this is folklore, okay, कि जो आत्मा है अगर कहीं पे दुखद घटना से उसकी मृत्यु होती है इंसान की, and वो अगर भटक रहा है, so it lives the same day again and again and again and again. And I'm getting goosebumps right now. Yeah, so am I. Yeah. So maybe did somebody pass away here nearby or something? Right. What I'm trying to say is, this is again another belief that it keeps on living the same day. That again is haunting. That's the reason why some people say कि हाँ, जैसे भानगढ़ का एग्जाम्पल हो गया कि भानगढ़ में the place is haunted. शनिवार वाड़ा लोग बोलते हैं it is haunted. क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक ज़माने में नारायण राव को मार दिया था. Right. So yes, these places I'll come back to actually, because मुझे ये सब places actually काफी interesting है और उस पे मुझे काफी विस्तार में उनकी stories जाननी है for sure. But एक जो आपने बोला वो काफी interesting है in terms of like haunting, जैसे आप बोल रहे हैं. अभी ये जो story आपने बोली of this lady who actually is जिन्होंने देखा किसी को, so very similar to that actually I also have a friend जो मेरा बचपन से काफी फ्रेंड रहा है, और हम लोग की एक कॉमन फ्रेंड की मॉम शी पास्ड अवे, एंड ही डिडंट नो शी पास्ड अवे, एंड ही वाज एंटरिंग द सोसाइटी, एंड ही apparently met her, and they spoke like for 5-7 minutes, and then he goes up, and when he goes up, then his mom says that, by the way, did you hear about did you hear about the friend's name and her mother? So he's like, नहीं, क्यों, क्या हुआ? He's like, I just अभी मेरे को नीचे मिली 5 मिनट पहले, मैं उनसे बात कर रहा था. तो he's like, when did you? He's like, just now. He's like, she passed away like 2 hours back. And I was like, what? And so it is really, really, but ये मतलब कितना, how much of this do you think is like also on a person's belief, like a practical person,
क्या प्रैक्टिकल पर्सन लोग से ये कम होता है एंड पीपल हु आर लिटिल बिट मोर स्पिरिचुअल जिनमें फेथ के बारे में ज्यादा कुछ सोचते हैं वैसा? बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब मैं अपनी बात करूँ, आई थिंक आई एम एक्सट्रीमली प्रैक्टिकल एंड फुल एंड एब्सोल्यूट स्केप्टिक. मुझे तो आज तक कभी ऐसा कुछ भी रिमोटली कभी फील नहीं हुआ. एंड मैं सोच रहा हूँ कि इज इट बिकॉज आई एम प्रैक्टिकल, उस वजह से. तो इसके लिए एक कहावत, आई थिंक माय फादर इन लॉ वंस टोल्ड मी, दिस वाज व्हेन आई वाज राइटिंग, बिफोर राइटिंग दैवा. He told me, if you believe in something like in the spirits and spiritual things, or even in whatever it is, even if it is your gods, whichever god you want to believe in, if you believe in it, then you'll have to follow it as truth. That's why it's called faith, right? If you don't believe in it, then nothing will affect you. You'll keep on going. That's what he told me. Okay, so he asked me, do you believe in it? I said, yeah, because that's the way I've been brought up. I was brought up in a very religious environment. My mother was religious, right? And my father was very practical. So I have a very good balance. But if you ask me, have I had certain experiences? I'll say yes, because you've read Daiva. I mentioned a few experiences there itself. Again, I don't have answers as to how it happened. Right? Again, I leave it open to the reader or the audience to, kind of, if it is relatable, well and good. If it's not relatable, just fine, carry on. So what I sincerely feel is, if you don't believe in it, then you shouldn't really go after it. But if there is a power, whether it's so again, वहाँ पे भी ये एक तो छोटे छोटे आत्माएं हैं या प्रेत हैं जो इधर उधर भटकते हैं. Like you mentioned of the lady and the son, it is very much possible that that person is reliving the same incident again and again. And apparently this guy bumped into her, and that spirit might not even know that it passed. Right. I mean, this is just a speculation. Okay, it's purely speculation. Second one would be that it's the energy that remained from that particular being. Yeah, being. Again, अगर उसको हम भूत बोलते हैं तो भूत वो है जो एग्जिस्ट करता था. So now it doesn't exist. So technically it doesn't exist. बट मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि स्पेक्यूलेशन होना तो डिफिकल्ट है. सी, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल दैट देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स जो लोग मतलब ऐसे एक्सपीरियंसेस अगर फील करते हैं, राइट? आई एग्री, कैन माइंड के योर माइंड कैन प्ले लाइक वेरी फनी ट्रिक्स ऑन यू, but then mind can play funny tricks, especially when you're at your weakest, lowest, vulnerable state point in your life. True. It could be because of some medical condition, it could be because of some career related issues, it could be relationship, it could be something else. Whenever you are at the lowest point in your life, that's when the mind starts playing tricks on you. So it's very important to have a very strong mindset. And also another thing, when you talk about these ghosts ya atma ya jo bhi hai pret, you also have to talk about the conscious and the unconscious. That again is kind of linked with all these theories. Again, it's a Western concept. Okay, so what is conscious? Whatever is, whatever I can absorb in my conscious mind is very limited. This is what I'm seeing. Tunnel vision. Right, and then whatever I'm hearing is based on what my ear can afford to hear. Right, there are limitations. Whatever touch का भी limitations. आप वहाँ से ऐसा करोगे मुझे touch feel नहीं होगा. That doesn't mean that you're not doing it like this. या जो भी है. Right. But again, you can amplify. You can use a binocular to see जो आगे हैं, जो मेरे vision से आगे देखने के लिए, या microscope use कर सकते हो, telescope use कर सकते हो. But that doesn't mean that I'll be able to see the unconscious. या ऐसी चीजें जो मेरे सेंस ऑर्गन्स के लिमिट से बाहर है. राइट. एंड वहाँ पे यू हैव ऑल दीज यू कैन से सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल एंटिटीज और व्हाटएवर. दैट्स द बिलीफ. सो दीज आर थिंग्स दैट वी कैन नॉट perceive unless maybe they want us to perceive, something like that. You can always carry these whatever meters and all, but I don't know how much of it is true or not. Again, I don't know. I've never used it. But yeah, but like I said, I've seen these possession rituals and all. So yeah, uska bhi scientific explanation hai. I explained it in that last episode. Right. I've talked about your voluntary possession. I've talked about involuntary possession. Then there is another kind of possession which I've talked about in my latest book called Dakini. It's the possession which you see in most films and all. It's Parakaya Praveshanam. Parakaya is
another body. Parakaya. Kaya is body, whatever it is, and praveshanam is pravesh karna. Right. So parakaya praveshanam is अगर आपके अंदर parakaya praveshan करना है तो an spirit or an atma is entering your body. Okay. Then it takes control of your body and you are possessed. Okay. And उसमें वो involuntary voluntary दोनों. Possession means parakaya praveshan. Right. ठीक है. एक और होता है काया परिवर्तनम. This is very interesting. काया परिवर्तनम is when काया जो है आपकी जो आपका शरीर है वो it changes, it metamorphoses into something else. So like Yakshi, Dakini, you've got werewolves is an example. I mean, if your audience is mostly used to Hollywood horror, then werewolves are a perfect example. Kaya Parivartanam. The body changes into a different animal. Dr. Jekyll and Mr. Hyde is an example. It's not split personality. Got it. It's Kaya Parivartanam. The body is changing into something else. So I've kind of explored that in my new book. But ये actually होता है ऐसा? कहानियों में तो बोलते हैं. पुराने जमाने में बोलते थे कि लोग श्राप से राक्षस बन जाते हैं. श्राप का कंसेप्ट आ जाता है. अब श्राप क्या है? Do you believe in श्राप्स? Do you believe in curses? मतलब थोड़ा सा तो ऐसे डेफिनेटली एक तो कर्मा का होता है कि अगर आप किसी को कुछ बुरा करते हो तो उसका एक बैड कर्मा आपके पास आता है. दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग. दूसरा होता है कोई आपको कर्स करके चला जाता है कि जा तेरे साथ ऐसा होगा, एंड वो होता है आपके साथ. बट उसमें भी आई थिंक इट्स अ लॉट टू डू विद माइंड, राइट? बिकॉज़ एग्जैक्टली, बिकॉज़ इफ यू एक्सेप्ट इट, अगर आपको कोई कर्स करके जाता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हो, वो तभी आपको ज्यादा परेशान करती है, एटलीस्ट मेंटली आपको परेशान करती है, कर्स असर करे ना करे. सो देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. ओके, आई मीन इफ यू वांट टू हियर इट, आई कैन. प्लीज. कर्सेस का, सी अकॉर्डिंग टू आवर माइथोलॉजी, हमारे पुराणों के हिसाब से श्राप हैज टू बी validated by Brahma. Okay, so there is a story about Kadru and Vinata. So these Kadru is Garuda's mother. Vinata is the mother of Vasuki and your Anant and all the Nagas, the serpents. Okay. So these two were sisters, and they were married to this Kashyap Muni jo hai. Okay, and he is the progenitor of all the beings on earth. At least that's the belief in our Purans. So what happened was that these two sisters, they didn't get along very well with each other. And especially Vinata, she had this very thoda ek competitive type की थी, and she wanted to, what happened was, जब एक समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम उच्चैश्रवस करके एक घोड़ा उसमें से आता है. अब घोड़ा वहाँ पे समुद्र के किनारे खड़ा है, एंड यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ, एंड These two women, they are standing there, and Vinata asks, बहन बताओ उसकी जो पूंछ है, सफ़ेद घोड़ा है, उसकी पूंछ जो है किस रंग का है. ओके, एंड अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हारी गुलाम बनूंगी, अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तुम मेरी जिंदगी भर गुलामी करोगी. ओके, व्हाट शी डज इज, ये जो बेट है वो नेक्स्ट डे कुछ होना था. आई मीन एग्जैक्ट वो मुझे भी याद नहीं अभी. What she does is, वो अपने बच्चों को कहती है, जो she gives birth to 1,000 nagas, 500 nagas, no 1,000, 500, and she tells these serpents कि कल सुबह जाके you have to पूंछ पे लिपट जाना और उसको ब्लैक कर देना. वो वाइट कहेगी, तुम लिपट के ब्लैक कर देना. ठीक है. So interestingly, few of the nagas who were the righteous ones, वासुकी, अनंत, तक्षक, करकोटक, इस तरह से कुछ नाग है. The ones who are worshipped in Hindu mythology. वासुकी जो कि शिव के गले में है, अनंत जो विष्णु जी के से एसोसिएटेड है. So they decide कि नहीं, हम नहीं कर सकते, ये गलत होगा. ठीक है. तो कहते ठीक है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम लोग महाभारत के टाइम पे तुम्हारा मतलब एक सर्प सत्र होगा, बहुत बड़ा यज्ञ होगा जिसमें तुम जल के मर जाओगे सारे के सारे, जो भी मेरी बात नहीं मानेगा. एंड अनफॉर्चुनेटली व्हेन दिस कर्स गोस, सो जो कर्स है वो इनके मुंह से ब्रह्मा के पास पहुंचता है, तो ब्रह्मा हैज टू अप्रूव इट. समथिंग लाइक दैट इज देयर, दैट्स व्हाट आई रेड एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. एंड ब्रह्मा अप्रूव्स इट विदाउट थिंकिंग और समथिंग लाइक दैट, एंड कर्स लागू हो जाता है. ऑल दीज नागास आर स्कैर्ड, क्या करें. एंड अनंत इज ऑलमोस्ट लाइक अ बुद्धा. ही इज लाइक, आई कांट टेक दिस एनीमोर, आई एम लीविंग. And then he lives his reclusive life. Vasuki is a Nagaraja, so he's like the Kshatriya kind of this thing. वो भी है,
वो अलग टॉपिक है. So what happens is Vasuki goes to Brahma and says, why did you approve this curse when you knew that I am on your side, I am helping the devas for the Samudra Manthan and all, why did you do that? He says, no, this is part of the whole destiny wala bigger thing. plan. It's a bigger plan, that's why I didn't disapprove it. Don't worry, there will be a son who is born to one of your sisters who will marry somebody with the same name. And thus there is this Jaratkaru करके, there is a sage जिसकी शादी होती है, Jaratkaru करके वासुकी की बहन होती है, उनसे शादी होती है. Then they have a child called Astika. The Astika is the one who goes and stops this Sarpa Satra. Otherwise all the Sarpas were burnt. Okay. Many of the Sarpas they are burnt. Right. बहुत कम बच जाते हैं. So that is the whole idea of a curse. The curse once goes from the mouth, it has to be approved by Brahma. And it's also believed that, now this is something which I've heard from my grandmother, कि कर्स अगर आप किसी को कर्स करते हो तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू, क्योंकि हम करते हैं, ठीक है, कुछ लड़ाई हुई, किसी ने पॉलिटिक्स किया ऑफिस में, मन ही मन हम बहुत उनको कोसते हैं या कर्स करते हैं कि यार उसके साथ ऐसा हो, उसके साथ वैसा हो. थिंग इज, जब आप कहते हो ये, बी प्रिपेयर्ड टू लूज समथिंग फ्रॉम योर साइड एज वेल, व्हिच इज ऑन अ वेरी सिमिलर स्केल. अगर आप कहते हो कि उसके साथ ऐसा हो, उसकी जॉब चली जाए, तो आपके साथ भी कुछ वैसा बाद में आएगा, क्योंकि यू विल हैव टू लूज समथिंग. वही बैलेंसिंग एक्ट नीड्स टू गेट बैलेंस, राइट. हाँ, एनर्जी का वो कंजर्वेशन वाला वो अगर प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई करते हो तो वही है. कर्स अगर आप देते हो, देन बी प्रिपेयर्ड टू लूज समथिंग फ्रॉम योर साइड. दैट्स अ डेलिबरेट कर्स. गॉट इट. द अदर वंस आर व्हेन यू डोंट डू समथिंग रॉन्ग एंड समबडी डज समथिंग रॉन्ग टू यू. वो एक नेचुरल कर्मा वाला एक कर्स होता है, उसमें आपको कुछ, यू डोंट डू दैट, it happens. Got your point. Okay. So yeah, that's something very interesting. I don't know how we came to this topic. No. So, talking about like the haunting bit, now I actually wanted to understand about, मतलब ये question मेरे दिमाग में बहुत टाइम से है. वो अभी कहते हैं कि मतलब जो आत्माएं रहती है या जो भी स्पिरिट रहते हैं, जो घूमते रहते हैं, वो हम लाइक जैसे भी 3 टाइप के गन होते हैं, देवगन, मनुष्य गन और राक्षस गन. तो कहते हैं कि अपना ऐसा कुछ है बिलीफ या कुछ पुरानाज में कि वो देवगन को ही सिर्फ दिखते हैं, राक्षस गन को कुछ अफेक्ट नहीं करते, एंड मनुष्य गन को दिखते भी हैं, अफेक्ट करते हैं. इज देयर समथिंग लाइक दैट? I have no idea. To be honest, I have no idea, क्योंकि even I've see राक्षस का भी देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल डिफरिंग ओपिनियंस. राक्षस एक तो माइथोलॉजिकली हम जब देखते हैं राक्षस या राक्षस जिसे कहते हैं हम लोग, इट्स अ बिग स्कैरी मूंछों वाला विद अ हॉर्न, लंबे फैंग्स, स्कैरी क्रीचर. ओके, देव इज फेयर, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग. मनुष्य तो मनुष्य है. The thing is, there are a lot of scholars who believe that, even historians who believe that these Rakshas were not really like supernatural beings. They were like पुराने ज़माने में जंगल में रहने वाले लोग थे जो who had this barbaric kind of lifestyle. Yeah. So, and when the civilized people, yeah, whatever you want to call them, when they came across such people, they labeled them as Rakshas. That was the way they identified them. God. So this is something, I mean, that I have heard, but Rakshas के तो इतने सारे कहानियाँ हैं. Right. Rakshas, नहीं, but वो Rakshasas have, I'll tell you something. They can use something called Maya. Okay. Maya is like the power of illusion. Okay. So they have like, they can, it is believed that अगर आपको कभी like you're, I mean, this is a very old belief. Okay, अकेले चल रहे हो, okay, and suddenly you feel dizzy and you are perfectly all right and you're passing some remote forest or something and suddenly you feel dizzy. या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए and in the evening time or after sunset and you suddenly start hallucinating. So it is believed that ये राक्षस की माया है. Okay. I mean, ऐसा मतलब पुराने स्टोरीज या फोक टेल्स या बिलीव्स में ऐसा सब होता था. बट ऑब्वियसली नाउ वी नो दैट पीपल के पेड़ के, वी नो क्या है, आई मीन इट्स अगेन स्पेकुलेशन दैट कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रोड्यूस करती है रात को ये बरगद और पीपल के जो पेड़ हैं, उसके वजह से अगर आप उसके नीचे बैठोगे तो यू हैव दिस tendency to absorb more carbon. I don't know again if it's scientifically valid or not, but this is a common belief. Okay. At least वो scientifically तो इस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं कि उसके वजह से you hallucinate. Right.
ठीक है। और पुराने ज़माने में बोलते भी थे कि बरगद के पेड़ के नीचे रात को नहीं भटकने का, वहाँ पे आत्माएं होती हैं। विक्रम वेताल, इफ यू रिमेंबर, वेताल उसी पे लटका हुआ होता है, एंड विक्रम हैज़ टू गो देयर एंड टेक द वेताल। सो अगेन, answer to your question will be very difficult, but the Rakshasas have the capacity to play with Maya. They can play tricks with your mind and everything. And Manushya, like I said, they have this limited perception, just the five senses. उसमें जो दिखता है, जो सुनाई देता है, जो सूंघने को मिलता है, वही है, right? Nothing beyond. So unfortunately, humans are having this limited, whatever capability. It is. Yeah. Now the thing is, we have the choice to believe कि इससे आगे कुछ है ही नहीं, right? Yeah, we choose to believe है, but we don't know it. Yeah, we can't comprehend We it. cannot. But Rakshas और भूत मतलब क्या अलग होते हैं? So they are not. Rakshas is a race. Because no. Oh, okay. Bhoot is something that existed. Because normally जब भी हम बात भी करते हैं तो ऐसे बोलते हैं अरे ये भूत राक्षस ये सब लोग whatever. Rakshas completely different. In fact, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि बहुत ही अलग टॉपिक हो जाएगा. Right. But राक्षस, भूत, दानव, दैत्य, असुर, पिशाच, ये सब अलग-अलग चीजें हैं. Got it. Rakshas, we already spoke about Rakshas. I think Rakshas comes from Brahma's breath or something. I don't remember exactly what it was, but I think this is mentioned in the Brahma Vivarta Purana. I don't remember exactly. So again, so that's why I'm not talking about it. But the thing is, Rakshas word comes from Raksha, मतलब रक्षा करना, preserve करना, बचाना. Right. So there is some story related with that, some etymological tale. So Rakshas is different from your Danav, and in fact, from what I remember, Rakshasas and Danavs or Daityas, I don't remember which ones, they cannot see, I mean, they cannot even stand face to face. Itna zyada enmity hai unke beech. For example, I think there is a story about Ravan and Surpanaka. Ravan is a Rakshas. That's what, in my belief, it's correct. If it's correct, then Surpanaka was married to a Danav. Right. Something like that was there. So Ravan couldn't stand Surpanaka's husband, and I think Ravan had killed Surpanaka's husband. Something like that was there in the Ramayana. So I think we'll have to verify it. So that's what I said ना. So they are all different entities. Understood. भूत वही है जो एक टाइम पे exist करता था, अब exist नहीं करता है. That's your. It's भूत is more like a, like I said, it doesn't exist. I know it sounds very weird क्योंकि हम बोलते रहते हैं यार उसके तो भूत पिशाच है या उसके ऊपर तो भूत चढ़ गया है, but the भूत doesn't exist. आत्मा प्रेत वगैरह एग्जिस्ट करता है. I mean, if at all you believe it exists, right? Right. हाँ. Okay. I know it's kind of थोड़ा rhetoric उसमें चला जाता है. नहीं मतलब ऐसा like I'm just trying to understand like because हाँ. मेरे दिमाग में वही आता है. भूत means क्या? अगेन पंचभूत वगैरह उसमें चलेंगे वो अलग कंसेप्ट हो जाता है. Got it. नहीं मतलब नॉर्मली मैं इस हिसाब से सोच रहा हूँ ब्रेकिंग इट डाउन लाइक नॉर्मल लोगों के लिए, जैसे नॉर्मल हम जब भी सोचते हैं इंसान, सो देन वो ऐसे सोचते हैं कि भूत. आप ये कह रहे हो मैं इंसान नहीं हूँ. नहीं, फ्रॉम भूत पर्सपेक्टिव मतलब हमारे लिए भूत फर्स्टली एक तो है कि भूत के बारे में जब भी बात करते हैं, आत्मा के बारे में बात करते हैं तो हमेशा वो नेगेटिव या कुछ नेगेटिव एनर्जी होती है कि मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल भी. It's never like that. It's just that it's the unknown. और हम भागते हैं उस चीज से. A lot of times, again, if you believe in it, a lot of times these ghosts or atmas or whatever you want to call it, see, interchangeably use होता है. भूत, प्रेत, आत्मा, ghost सबको interchangeably use करते हैं आजकल. कोई distinction नहीं है. ठीक है. तो the thing is, some of them are lost souls. Okay, some of them don't even remember why they are lost, why they are wandering. Right. Some of them may have some incomplete thing in their life and they need help. Okay, so yeah, so not all spirits are bad. It's just that belief इसलिए आता है क्योंकि it's something which is not living. Got it. So ये haunted places के बारे में थोड़ी बात करते हैं, and also stories के बारे में भी मुझे काफी बात करनी है because अभी पहले भी आपने एक स्टोरी बताई जो वो आंटी की थी, वो काफी इंटरेस्टिंग थी. टेल मी अकॉर्डिंग टू यू 3 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन इंडिया, जो अगर कोई भी मतलब कोई भी ऐसा भूत प्रेत में बिलीव करता है जो हॉन्टिंग फैनेटिक हो, जिसको ये सब चीजों में इंटरेस्ट है, कहाँ विजिट करना चाहिए और क्यों? See again, I'll talk about 3 haunted places. Right. Most है या नहीं है, it's not something, it's not in my control. Of course. क्योंकि बहुत लोगों का एक्सपीरियंस ही नहीं होता है. Right.
ठीक है, आई मीन हॉन्टिंग का राइट बहुत कम लोगों को वो फील होता है, राइट उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट दिस प्लेसेस. सो आई थिंक फर्स्ट वन इज एवरग्रीन भानगढ़. भानगढ़ तो मतलब अब उसका नाम ही खराब कर दिया है एक टाइप से Right. देखा जाए तो. सी भानगढ़ यूज्ड टू बी वेल huge settlement. There were around 9,000 houses within that fort. ठीक है, there was a market. ठीक है, 3 मंदिर कुछ है वहाँ पे थे. ठीक है, it was a full fledged क्या कहते हैं फ्लरिशिंग सोसाइटी कह सकते हो यार. आई मीन वीटी क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्लानिंग जो भी. सो दैट काइंड ऑफ ऐसा कुछ था वहाँ पे. एंड दिस वाज द 17th century. आई थिंक माधव सिंह, राजा माधव सिंह हैड कंस्ट्रक्टेड भानगढ़ फोर्ट. एंड इसके दो the thing is it is cursed. अब ये कर्स के पीछे again we spoke of curses earlier. One version is that वो कर्स कैसे आया, उसके 2 स्टोरीज है. तो फर्स्ट स्टोरी इज दैट जब ये राजा आए थे वहाँ पे, तो उधर उस भूमि में देयर वाज दिस बाबा who used to meditate and everything. उनका आश्रम था, घर था या जो भी था वैसा कुछ था. एंड पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर कोई राजा वहाँ पे कुछ बनाना चाहता था तो वो आज्ञा लेता है, क्या मैं ये बना सकता हूँ यहाँ पे. ठीक है, सो तो बाबा ने कहा कि हाँ बना लो, बस एक शर्त है कि आप जो भी बनाओगे वो उसकी जो दीवार है वो मेरे घर की दीवार या मेरे आश्रम की दीवार से ऊंची ना हो. ठीक है, अब हुआ क्या, ये इस राजा ने तो वो बात मान ली थी, बट फर्दर जनरेशन जो भी आया था, रिप्लेसमेंट आए थे राजा, he kind of didn't really pay heed to this. He extended the heights of the fort, the fort walls. अब क्या हुआ, उसका जो शैडो है, जो परछाई है, वो इस बाबा के घर के ऊपर या आश्रम के ऊपर पड़ने लगा, which means कि हाइट बढ़ गया. तो बाबा gets very angry and he gives a curse कि जो, क्योंकि तुमने मेरी बात मानी नहीं, दैट्स वाई ये जो भूमि है जहाँ पे तुमने ये बनाया है ये नष्ट हो जाएगा, इसका सर्वनाश हो जाएगा. सो दैट इज वन स्टोरी. द सेकेंड स्टोरी इन्वॉल्व्स अ क्वीन कॉल्ड रत्नावती. इस स्टोरी में क्या है कि देयर वाज वंस अ क्वीन वाज वेरी ब्यूटीफुल, लाइक द फेयरेस्ट इन द लैंड काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी. एंड देयर वर लाइक suitors from all over the country, all over different kingdoms, who were willing to lay down their life for this beautiful maiden. And then there was this tantric who was also liked her, vicinity, and he was very attracted to her and he wanted to make her his wife for and he would stalk her and everything. And once it happened that she visited the market. I told you there was a market, right? So she had gone to the market, and in the market she had purchased some itra perfume. Right. So the moment she is about to pick up this itra, what this tantric does is he replaces it with a love potion. Okay. ठीक है, अब ये इसको पता चल जाता है और उसको गुस्सा आता है और वो उसको उठा के, और ये एक बड़े पत्थर के पीछे को छुप जाता है. इसको गुस्सा आता है, ये उठा के इसको इत्र को फेंक देती है उसी पत्थर पे, वहाँ पे फट जाता है और उसके पता नहीं इम्पैक्ट में, दिस इज द स्टोरी अगेन, ओके, इट्स अ फोक टेल, वो बोल्डर ऐसे रोल करके उसके ऊपर गिर के वो तांत्रिक मर जाता है. मरते मतलब जब वो दम तोड़ रहा था, वो मर रहा था, वो मरते मरते वो श्राप दे देता है कि ये रानी और ये पूरा जो जगह है ये पूरा इसका सर्वनाश हो जाएगा. एंड वेरी शॉर्टली इट इज बिलीव दैट आई थिंक ईदर देयर वाज एन इन्वेजन और देयर वाज अ ह्यूज फायर. उसमें आई थिंक इट वाज इन्वेजन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट सब कुछ तहस महस हो जाता है. द रानी इज ऑल्सो किल्ड एंड उसके बाद वहाँ पे कुछ बचता ही नहीं है. एंड देन दैट प्लेस हैज बीन कंप्लीटली अबैंडन्ड. एंड कहा जाता है कि इट्स सो कर्स्ड कि वहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हुई फिर से वहाँ पे वही दोबारा बसने का, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हुई. सो दैट इज द स्टोरी ऑफ भानगढ़, व्हिच these are the two popular versions. अगर आप वहाँ जाओगे, I don't know how many more versions you'll get. This is the version that has trickled down and that is available all over, which is available even in your newspaper websites and all. So
that has happened, and people believe that they hear voices of crying and everything when they are there. And sunset के बाद तो वहाँ पे बोर्ड ही लगा हुआ है ASI का कि इधर आना ही नहीं है, it's not allowed. बट क्यों ऐसा लिखा हुआ है? इज इट बिकॉज कुछ है? मतलब सो टेक्निकली ऐसा हॉन्टिंग एज सच कुछ है ही नहीं बानगढ़ फोर्ट में. I don't know. How can I mean, see again, अगर आपको पता है ये भानगढ़ फोर्ट है, अगर आपको पता है कि दिस इज इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट, देन ऑब्वियसली जब आप जाओगे, आप ऑलरेडी आपके दिमाग में सजेशंस फीड हो चुके हैं कि ये हॉन्टेड है, तो मे बी यू विल फील समथिंग. बट इफ यू आर नॉट फेड योरसेल्फ समथिंग एंड यू आर गोइंग देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू फील समथिंग, देन देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग. I mean, with the place. Otherwise, so you see, once you have this suggestion, then it's mind will play. Right. It will start showing. Will try to show ये है. कुछ भी पत्ता भी हिलाना, you will start feeling हाँ कुछ गया है वहाँ पे. So that's there. I think the second another place which I'm not saying it's the second most haunted, but a very similar place with a similar story. It is Shanivaar Wada, Pune. Marathas were the Peshwas ruled from there. Bajirao, not Ranveer Bajirao, the real Bajirao, he constructed the fort. Again, लगभग same time में ही construct किया है. I think 18th century में कुछ. And beautifully constructed, a lot of fountains and all. And it so happened that after Bajirao was killed, जो भी, I mean, he died suddenly, and I mean, जो भी हुआ था, and जो successor है, it turned out to be his son, and his brother wanted to take over, Raghunath Rao. Okay. And then again that son dies. Again Raghunath Rao feels that now it's my turn. Again that's but the replacement hota hai, that is the next brother. I mean the next son. Right. Okay. That son also dies. And then now what happens is now Raghunath Rao is very sure that he's going to be the king, because the last son is underage. He's just a teenager. So he's very sure that I'm going to be the next king. But क्या होता है, उसको नारायण राव पेशवा करके जो लड़का I mean the teenage, he was a teenager at that time, so he was made he was brought to this thing Gaddi, but all the decisions will be taken by Raghunath Rao. But that upsets Raghunath Rao's wife. And my husband should be the king. He's again become this dummy for a child, a teenager. So she, so this is again the story. She calls these secret assassins, and they come on the night of Ganesh Chaturthi when everybody is busy. They come and they kill the teenager. Narayan Rao, and he sees his uncle. Okay, and he calls him, "Kaka, मुझे बचा लो करके, uncle मुझे बचा लो करके." And what he does is वो ऐसे behave करते जैसे सुना ही नहीं, something like that is there. And these assassins kill him. They chop him into small pieces and dump him into the river nearby. And it is believed that उसके बाद लोगों को उसकी चीखने की आवाज़ें आती हैं कि काका मुझे बचाओ करके, मराठी में obviously, हिंदी में नहीं, काका मला वाचवा करके बोलता है. I'm not sure if I'm pronouncing it correct, but this is what I've heard. And उसके बाद the British took over the place, and then there was a fire. Again, very similar kind of points, and now though it's in ruins, it's just a tourist spot, and it is believed that it is haunted and by this boy who was killed. क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था. At least this is what the popular version is. At least अभी का नहीं, पुराना जो version था उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था. It was dumped into the river, right. Cutting down into pieces. बहुत ही, it was a brutal murder. It's an अपमृत्यु, right? So that is the haunting of that particular place. Again, now दोनों जगह का जो है common element क्या है? Fort है. Okay. Now the thing is, it is very much possible कि रात को लोग आते हैं वहाँ पे और they can do whatever they want to, all illegal activities. So उसको रोकने के लिए भी ऐसी कहानियाँ बनाई जा सकती है. So we don't know. What's if the you third? ask me, I have been to Shanivaar Wada. I have not had that kind of an experience, but I like historic places. So when I go to such places, I start living in another era. Right. That's because of the imagination I have.
बट इफ यू आस्क मी हॉन्टिंग का तो ऐसा मुझे तो कुछ लगा नहीं. बट कुछ क्रीपी लगा व्हेन यू वेंट क्रीपी देयर? तो लगता है क्योंकि वो Yeah. क्योंकि यू नो द स्टोरी, Ah, यू नो द स्टोरी, सो यू लाइक हाँ यू एक्सपेक्ट कि कुछ हो, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है. भानगढ़ अगेन, यू सी द थिंग इज, अगेन वही मैं कह रहा हूँ, यू नो इट, हैड यू नॉट नोन इट, then somebody tells you this is a haunted place and you're standing there. Yeah, even better, when you are there and you stand and you come back from that place to your hotel room or wherever you are in your car, and then the person tells you, dude, that's a haunted spot where you're standing. वहाँ पे आपको अगर goosebumps आता है, then that means maybe something was there, or maybe it's the mind. Got it. Right. So these are the two forts which are scary. Now I'll come to one forest in Kerala. Again, see, these are all related to historic incidents. Now, whether these are part of actual history or folklore, I cannot prove it. Right? I think जो शनिवार वाड़ा का, I think that's part of actual history. भानगढ़ का, I don't know. I'm not the right authority to claim कि ये हुआ है या नहीं. Then there is this place called Lakkidi in Kerala. Pretty famous in Wayanad, Rahul Gandhi's Wayanad. Now Priyanka Gandhi आज जीती है. Right. So beautiful place. And वहाँ पे you have this very interesting place called Lakkidi, it is a rainforest at a very high altitude and scary place. And it was not the kind of place where you can move or commute easily. It was almost immobile. Okay, so again this story happens in the 1700 1750 के टाइम पे. all the both the stories इससे पहले वाले भी उसी टाइम के हैं. Right. ठीक है. So maybe उसी टाइम पे सारे haunting जगह बने थे. So the British Viceroy at that time, he kind of announces कि मुझे इस जगह से, so उस टाइम तो states ऐसे होते हैं ना, मैसूर स्टेट, ट्रैवनकोर स्टेट, इस तरह से होते थे. तो मुझे यहाँ से वायनाड से मैसूर स्टेट के लिए मुझे रास्ता निकालना है. तो जो भी मेरे लिए रास्ता निकाल के देगा या रूट बना के देगा, उसको आई विल गिव ऑनर एंड व्हाटएवर इट इज. सो देयर वाज दिस ब्रिटिश, लॉट ऑफ पीपल लग गए उसमें. सो वन डे दिस ब्रिटिश इंजीनियर, he was just observing, and he observes this tribal chieftain called Karin Tandon. He is traversing the hilly paths with ease. कहीं जा रहा है. So he is very kind of, इसको कहाँ जा रहा है, मतलब वो उधर जा रहा है, उस तरफ, परली तरफ. अच्छा रास्ता है, मतलब हाँ उनको पता रहता है ना, वो तो जंगल में ही रहते हैं. आई थिंक इट वाज फ्रॉम द, आई डोंट रिमेंबर द कास्ट नेम, बट सो करिन टंडन उससे बिफ्रेंड कर लेता है. एंड दिस ब्रिटिश ऑफिसर टेल्स हिम, मुझे रास्ता दिखा दो, आई विल गिव यू व्हाटएवर यू नीड वगैरह वगैरह. वो अपने इनोसेंस में हाँ बोल देता है. एंड यू नो वी हैव दिस कि हाँ वो गोरा बोलेगा तो, आई मीन गोरा इज इन द वाइट, जो ब्रिटिश बोलेगा तो हम तो करेंगे, मान सम्मान की बात है. लेके गया बेचारा, पूरा रास्ता ट्रैवर्स करने के बाद फाइनली कम्स आउट ऑन द अदर साइड. दिस गाय इज एक्सट्रीमली हैप्पी, बट व्हाट दिस ब्रिटिश गाय डज इज ही किल्स द दिस चीफटेन करिन टंडन. क्यों? वरना क्रेडिट शेयर हो जाता है. अच्छा. सो उसको मार देता है. नाउ द रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, एंड what happens is that whoever takes that path, this is very old, okay, whoever was taking that path, they started hearing cries, and they were haunted by this mysterious presence and everything, and accidents started happening, people started disappearing, all these things. And then उसको उधर एक हमारे यहाँ क्या होता है, मंत्रवादी होते हैं, सॉर्सरर या तांत्रिक, जो भी आपको कहना है. So they are well versed in your shastras and everything, and he was called. And this mantravadi, what he does is वो पूरा अपना लगा के देखता है and बताता है कि ये करिन टंडन नाम का कोई यहाँ का बंदा है जो यहाँ पे मरा है, जिसको मारा गया है. Again मारा गया है, अपमृत्यु. And उसकी आत्मा भटक रही है, उसको मोक्ष चाहिए, या मतलब उसको खुश करना पड़ेगा, वरना वो गुस्से में मारता रहेगा. सो व्हाट दे डू इज, उसको पहले तो उसको कंट्रोल में लेके आना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो भटकता रहेगा. तो उसको एक बड़े से एक आयरन के लोहे के चेन से उसको वश में करते हैं, एंड देन उस चेन को एक बहुत बड़े पेड़ में बांध देते हैं, ठीक है, एंड फिर उसको वहाँ पे सेट कर देते हैं और कहते हैं कि आज से तू इसमें बसेगा
और तुझे यहाँ पे जो भी आएगा जाएगा तुझे प्रणाम करके जाएगा, काइंड ऑफ उसको वेनरेट करता है स्पिरिट डेटी की तरह। आज भी वो पेड़ है वहाँ पे, इनफैक्ट वो जो चेन है वो पेड़ के अंदर धंसने लगा है। दिस हैपेंड लाइक 200 years बैक। सो आज भी लोग वहाँ पे जाके उसकी मतलब दे लाइट लैम्प्स एंड व्हाटएवर, तो दैट exists, that place exists, that's supposed to be one of the haunted places in Kerala. Again, forest hai, it is very much possible that the people back then they were imagining things, light वगैरह इतना हमारी तरह टॉर्च लेके तो घूमते नहीं थे। So हो सकता है कि वहाँ पे स्पिरिट था इसका, या फिर हो सकता है इट इज द स्टोरी ऑफ द पर्सन हु डाइड जो इसको इनको हॉन्ट करती थी पासर बाइज को, या फिर दे वर जस्ट डाइंग नेचुरल डेथ्स और बीइंग हंटेड बाय टाइगर्स और यू नो ऑल दीस वाइल्ड एनिमल्स। सो एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। वी डिडंट have news channels or Instagram reels to record all those things back then. Again, I'm not making a joke here. Due respect, because it's a venerated place, and every year there is a march in remembrance of this current in that place. But अभी भी वहाँ पे मतलब लोगों को ऐसे experiences होते हैं? I don't know. I've not heard of anything, but it's believed क्योंकि उसको see the thing is that's what happens ना, you have to venerate certain spirits. Right. तो इसी से मैं एक और story पे आता हूँ, and this has happened in my own village. Very similar story. So this is something which my dadi used to tell me, and this is the first story in India's Most Haunted. If we can just get that first. So India's Most Haunted में first book है, first story है, which is inspired from this tale that my grandmother used to tell me. Right. Like long back. So उनके पापा के टाइम की स्टोरी है। So her father was like a very well respected like person in the village, and he had a theater, मतलब उस जमाने का थिएटर, आज का वो मल्टीप्लेक्स नहीं। You had one इतना सा रूम होगा, ऊपर वो कोकोनट लीफ के थैच रूफ होते हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्टर चल जाता है, हाँ हाँ उस टाइप का थिएटर। एंड सो my grandmother's father was owned, he didn't own the theater, he was working as a caretaker for the landlord. Okay, the landlord was somebody else, he was not living in that place, and my great grandfather, he was in charge of the place, so he had to make sure जो भी आसपास जो भी इनकम है, जो भी रेंट है, वो सब आ रहे हैं, सब टाइम पे पे कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू थिएटर से आ रहा है वो सब टाइम टू टाइम पहुंच रहा है, वगैरह वगैरह। So there was this I wouldn't name the person, but there was this person who was supposed to be this my great grandfather's right hand man or something like that. Some relation is there. I mean, not a relative, but somebody who was working for my was reporting to my great grandfather, and he was in charge of getting this rent and money from the theater. जो भी एवरीडे जो भी रेंट है वो लेके आना पड़ता था। एंड उस टाइम पे देयर वाज दिस स्ट्रेच ऑफ लैंड बिटवीन, अभी तो वहाँ पे सब आई मीन इट लुक्स डिफरेंट, उस टाइम तो मतलब इतने पेड़ होते थे, सो मेनी कोकोनट फार्म्स एंड ह्यूज ट्रीज, एंड आई डोंट नो हाउ मच यू आर अवेयर ऑफ केरला। केरला कैन बी वेरी स्कैरी, केरला, कर्नाटका, कोंकण रीजन, यू नो, very green, there are tall trees, very dense tall trees, then तो लाइट भी नहीं आती है, you can't even see the moonlight. तो वैसा सा सेटअप था, and you had hardly 3 or 4 houses in that whole region, and there was a temple, Krishna temple was there or something, some temple was there, and this person had to collect the this ticket collection and go to the place. So there was this route which was supposed to be haunted by a Yakshi. Yakshi is again जैसे हम नॉर्थ में चुड़ैल या इस तरह से कुछ बोलते हैं, उसी तरह से वी हैव केरला में यक्षी का कंसेप्ट। ऑल्दो द ओरिजिनल आइडिया इज ऑफ अ यक्षिनी, यक्षिनी इज वेरी डिफरेंट, पॉप कल्चर में इट्स कम्प्लीटली रूइंड। सो अभी के लिए अगर आप यक्षी बोलोगे तो वही वुमन इन वाइट, लंबे दांत, खून चूसने वाली, बट एक्चुअल कंसेप्ट वो नहीं है। ठीक है, ये पुराने नाटकों ने और फोक टेल्स ने इसको खराब किया है, समथिंग व्हिच इवन हैज हैपेंड टू डाकिनीज। सो ये यक्षी कहते थे कि वो यक्षी हॉन्ट करती है, एंड द थिंग अबाउट यक्षीज इज दैट
they appear as very attractive, and so I'll tell you what happens. So यूजुअली उसको लंबा रूट लेके जाता है घर पे, उस दिन लेट होता है तो ही हैड टू टेक अ शॉर्टकट, एंड द शॉर्टकट वाज द वन व्हिच इज हॉन्टेड बाय द यक्षी। ठीक है, एंड उस दिन वो लेट हो जाता है तो इस वजह से वो शॉर्टकट लेता है, एंड उसको पता है, उसको वार्न भी कर रखा है कि इधर यक्षी है वगैरह वगैरह, मत जाना, बट वो सुनता नहीं है, चला जाता है। एंड ऑन द वे उसको यक्षी, आई मीन ही हियर्स दिस फुटस्टेप्स बिहाइंड हिम, पीछे मुड़ के देखता है कोई नहीं है, फिर आगे चलता है, ठक 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 उसको आवाज़ आती है, पीछे मुड़ के देखता है कोई नहीं है, वापस मुड़ता है, ढम सामने एक सुंदर सी एक महिला खड़ी है। ठीक है, एंड ही इज स्मिटन बाय हर ब्यूटी। ओके, फर्स्ट लुक में ही ब्यूटीफुल, यू नो, उस टाइम पे ये था ना कि फेयर होना बहुत ज़रूरी है, तो फेयर लेडी, एटलीस्ट हमारे फोक टेल्स में तो यक्षीज आर वेरी फेयर, समथिंग विच आई डोंट रियली एग्री ऑन, एनीवे, ब्यूटीफुल फेयर लेडी, एंड उसको देख के एक मोमेंट के लिए he kind of freezes because he's very attracted and his hormones are all going up, and it's all around the place. And this, so what the modus operandi is very interesting. What the yakshi does is she'll ask chunna murukan undo. Murukan means chakli. No, sorry. Right. Not chakli, that's muruk. Murukku, sorry. Murukan undo means your supari है, आपका पान खाने के लिए सुपारी है। ठीक है, so this and what happens is that if you say yes, okay, she'll extend her hand, okay, and sorry, she'll ask for chuna, okay, and then she'll extend her hand. जब आप उसके हाथ में ये रखते हो, जो भी आप उसके हाथ में रखोगे, चूना या सुपारी या जो भी है, वो हाथ से एक होल बन जाता है, वो नीचे गिर जाता है, and when you bend down, she's gone. नहीं, and you pick it up, she'll jump on you and finish you. Okay. So this is very symbolic because something is going inside a hole. Right. So it's very symbolic. Again, how you want to interpret it is up to you. But that's how Yakshis used to work. And then they would drink the blood of, drain the blood out of this person. And तो इसको ये पता चल जाता है कि ये यक्षी है करके. And he starts running. And but I think from what I have heard is that the Yakshi, I don't know, he escapes that. Okay, he escapes the clutches of the Yakshi because he arrives at the temple or something, and he hears वो दूर बाहर एक पेड़ के ऊपर से ढम 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 करके, मतलब कोई गुस्से में आके ऐसे ऐसे मार रहा है पेड़ के उसमें ट्रंक में. सो उधर देखते हैं तो वो यक्षी बैठी हुई है अपने असली रूप में, वो उसको पेड़ पे गुस्सा दिखा रही है. यक्षीज आर ऑलवेज बिलीव टू reside in this devil's tree. It's the devil's tree, वो तो इंग्लिश नेम है, हम लोग उसको पालामरम बोलते हैं. पालपू is the flower that blooms on that this thing, and this flower is supposed to be very it has a beautiful smell. Okay, and Yakshi keeps those flowers in her hair, but the thing is that flower is supposed to be poisonous for humans. Okay, so this guy looks at that tree and she's sitting there and she's very angry, and it's believed that he lost his mind after that and he died a tragic death or something, and then his spirit was also wandering and all. तो उसके लिए वहाँ पे वही जैसे कहते हैं ना कि वो एक रूम सा बना दिया, वहाँ पे दिया जलाते हैं इस तरह से. So you'll find such things in villages. कोई ऐसे अचानक से मर जाता है या कोई सुसाइड कर लेता है तो उसके लिए एक जगह बना देंगे और उसको वेनरेट करते हैं. उसकी क्या कहते हैं, उसकी बुराई नहीं करते हैं, वो एक टाइप से भगवान बन जाता है लोगों के लिए. दैट्स व्हाट आई सेड अर्लियर व्हेन यू सेड क्या ये सारे भूत प्रेत सब नेगेटिव होते हैं, तो ये तो नेगेटिव नहीं है ना. आई मीन अगर इनको गुस्सा आया तो ये मतलब दे कैन हार्म यू. दैट्स व्हाई यू वेनरेट देम, यू प्लीज देम. ठीक है, व्हेन यू प्लीज देम देन दे विल ब्लेस यू. वेरी सिमिलर स्टोरी which I've heard, I think in the northern part of Kerala, in Kannur, I think. So there is this another Yakshi. Again, it's a Yakshi, female. This was a woman who learned the scriptures, the Purans and the Itihas Purans and Vedas and everything. And she was so well versed in those that she could actually easily challenge the learned Pandits.
Okay, and that became a matter of controversy because this time women were not allowed to read all these things, and especially from their community. So it is believed that she was killed or something like that, and then she becomes a Yakshi and she comes back to. Somebody was jealous of her, and he kills her, and she comes back to haunt the entire place. And then she was asked by a similar tantric or a mantravadi that please don't do this. Not everyone deserves to die because of one person. We request you, we'll venerate you, we'll worship you every year. Please come and stay in this tree or in this stone or rock or something, and we'll give veneration. इस तरह से. So ऐसे आपको बहुत सारे concepts मिल जाएंगे जहाँ पे हम venerate करते हैं ऐसे spirits को. So it's not negative, and this particular जो यक्षी है, she is known for her blessings. She is not known for this haunting story. She is known for her blessings because people come there asking for progeny, for child. जो जिनका बच्चा नहीं होता वो वहाँ पे आते हैं, बच्चा मांगते हैं कि हमें बच्चा दो. She blesses them, but obviously उसके rules कुछ follow वगैरह करते हैं. But whoever follows the rules and then comes back to venerate her again, it is believed that she blesses them with the child. So there are so many beliefs like that. सिर्फ नॉर्थ में के इवन साउथ में के नॉर्थ में भी होंगे अगर आप जाओगे तो. गॉट इट. व्हाट्स द सबसे मतलब डरावनी या भयानक स्टोरी क्या सुनी है अभी तक आपने? पर्सनल एक्सपीरियंस है. ओके, दिस माइट साउंड वेरी फनी because it is funny because I was a kid back then. I was in class 6th. 2000 was the year, and I was in Gurgaon. That's almost Delhi. And उस टाइम पे एक urban legend पैदा हुआ था वहाँ पे called Monkey Man. And कसम से कह रहा हूँ, मेरी जो हालत हुई है ना उस समर में, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट हो गए थे. मेरी मॉम शी हैड स्टार्टेड वर्किंग. I mean she was always with me, and that year she joined she went for a job after a very long gap, and I was all alone at home in the daytime. बहुत हालत ख़राब होती थी क्योंकि सारा टाइम न्यूज़ पे यही आता था, मंकी मैन आज यहाँ पे आ गया है, वो अपना क्या कहते हैं खिड़की खोल के आ रहा है, कहीं पे भी पहुंच सकता है, ये वो ये. So I think that time I think was the worst experience because I was a kid. Okay, and again I was not brought up in Kerala. I was brought up in this concrete jungle. I mean jungle तो नहीं, but I mean compared to Bombay, उस टाइम का गुड़गांव जंगल नहीं था. I mean concrete जंगल नहीं था. अब है, अब तो इट्स अ मिलेनियम सिटी, बट उस टाइम भी मतलब सारे घर थे. देयर वाज नॉट डेंस क्या वो पौधे ही नहीं, मतलब पेड़ ही नहीं होते थे उस टाइम. सो बट जब ये हुआ था at that time I was very haunted. I think I was haunted by the idea of a monkey man who could jump from the ground floor to the second floor and open the window bars and come inside and take me with him in a ship. That was very haunting for me. And that concept, there was a very similar concept even in UP. वहाँ पे क्या होता था, इनफैक्ट some people say कि actually वहीं से ये urban legend का I mean the rumor started. Nobody has seen it. ठीक है, people claim they have seen it, but again we don't know. But the thing is there was UP में what happened was कि लोग रात को सोते थे छतों पे गर्मी में, एंड रात को कोई ऐसे नोच के चला जाता विद दिस प्रेडेटर वाले फिंगर्स. यू रिमेंबर प्रेडेटर राइट? प्रेडेटर के थे कि वुल्वरिन के थे? ना प्रेडेटर के भी थे ना कुछ. सो नोच के चला जाता था, एंड सडनली गांव में एक नया एक अर्बन क्या रूरल लेजेंड पैदा हो गया कि मुह-नोचवा आ गया. And this muh-nochwa created a big havoc in the region. रात को किस के मतलब सुबह लोग उठ के देखते थे आज किसके मुंह पे ये लगा होगा, मुह-नोचवा, तो मुंह नोच के चला जाता है. So I mean it is very much possible that the monkey man and the muh-nochwa are kind of linked. मतलब उस टाइम तो न्यूज़ चैनल्स में ये तक आता था कि ये एलियन है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है. And I was somebody who used to watch your ET and your Independence Day. उस टाइम तो मतलब 4 साल ही हुए थे इंडिपेंडेंस डे को आए हुए, एंड मेरे को तो बड़ा फैसिनेशन होता था पूरे आइडिया से. मैन इन ब्लैक वगैरह उसी टाइम आए थे, ठीक है. सो हाँ ये हो सकता है. सो आई वाज काइंड ऑफ सो स्कैर्ड एट दैट टाइम. सो फॉर मी दैट वाज वेरी हॉन्टिंग. बट ये मुह-नोचवा भी जो था वो एक्चुअली हो रहा था.
हो रहा था। इवन मंकी मैन का भी लोग कहते थे कि हो रहा है, घर पे आके ये करके जा रहा है, हाथ पे वो करके जा रहा है, कोई कहीं पे कुछ शीशे तोड़ रहा है। नाउ द थिंग इज वी डोंट नो इफ इट वाज पीपल डूइंग इट or an actual this thing. I mean, if you remember Delhi 6, they tried to, metaphorically, Humanize that, use Monkey Man for a lot of other reasons. Beautiful movie. We spoke about it earlier. But again, we don't know if it actually existed or not. बट ये मतलब लाइक ये मतलब ऐसे सिचुएशंस और सिनेरियोज हैं जहाँ पे वी आर लाइक काइंड ऑफ लुकिंग एट पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल. हॉन्टिंग वाइज, लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक हॉन्टिंग वाइज, मतलब क्या सबसे डरावनी स्टोरी क्या सुनी है, मतलब जो एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से वो दैवा के टाइम पे जो मैंने आपको बताया था Right. रिगार्डिंग द चामुंडी, दैट वाज वेरी हॉन्टिंग फॉर मी. I don't if you want me to talk about it, I can talk about it. But that was because that was very personal. It happened to me. I was in my spouse's place in near Udupi in Karkala, and 120, 140-year-old house. Okay, and I was spending the night there for the first time. पहले क्या था, मैं बहुत बार आ के गया हूँ, डे टाइम में आया, शाम को निकल गया, ऐसे बहुत बार किया है, बट पहली बार मैं वहाँ पे एक रात गुजार रहा था. नेक्स्ट डे कुछ फंक्शन था. So and that place again, it's very dense with trees, and again the houses are like located far away from each other. You can't really shout from your house, and the other person cannot even hear you. So now it's slowly changing. So it so happened that that night I had this very weird dream. I have written a few stories of India's most haunted while traveling in that space, but I never had the chance to live or experience, a continuous kind of a thing there. So this was the first experience, and wahan pe I had a dream. उस dream में I had seen this hand, कटा हुआ हाथ मुझे एक particular direction में point कर रहा है. And that kind of freaked you out. नहीं, I was like हाँ ड्रीम है. एंड मुझे हाथ कटे हुए का मुझे बचपन में भी आया है, ठीक है. एंड वो हीरो का एक म्यूजिक है ना, वो फ्लूट वाला, Okay. वो उसके साथ बचपन में आया है. तो ये Okay. ड्रीम वाज लाइक रेमिनिसेंट, एंड देन व्हेन सडनली ये यहाँ पे हुआ, आई वाज लाइक क्या है ये. एंड बचपन में मुझे बहुत डर लगता था. देन From that music, हाँ वो क्योंकि वो ड्रीम में वो म्यूजिक आया था. okay. एंड इट्स इंटरेस्टिंगली इट्स बिलीव्ड दैट ड्रीम्स डोंट हैव साउंड्स. So what you imagine as sound, in dreams you kind of think that people are talking to you, but actually dreams में sound नहीं होता. That is the belief. Again, another topic for another day. Coming back to this one. So next day I talked to my spouse's relatives. ऐसा ऐसा हुआ. And the thing is, in villages they listen to you. They kind of have the patience and everything. And अच्छा, oh okay. उस तरफ point कर रहा था. तो उस तरफ तो चामुंडी का स्थान है. वो इस जगह की देवता है. आप जाके दैवा है, वहाँ जाके अदरवाइज तो वहाँ पे कुछ नहीं है. And the thing is, I was living there for the first time, so some of them suggested maybe since you have you're a newcomer, she wants you to pay a visit, acknowledge करके आ जाओ, इस तरह से होगा. And even so I was not allowed to go that day, क्योंकि वहाँ पे 5 बजे के बाद जाना अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ सम लोकल बिलीव्स. वहाँ पे कुछ हुआ था या जो भी था, तो मैंने कहा यार आज तो 5 बजे, आज मत जाओ, कल चले जाना, कल सुबह चले जाना करके. सुबह भी वही आफ्टर सनराइज. सो क्योंकि उस स्थान में दे हैव आल्सो प्लेस 2 प्रेतास और समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स इंफॉर्मेशन आई गॉट टू नो वेरी रिसेंटली आफ्टर राइटिंग द बुक. सो अगेन कमिंग बैक टू दिस स्टोरी. That night, the second night, I was sleeping in the same house, and suddenly in the middle of the night I wake up, and next day मुझे सुबह उठ के कहीं किसी जगह जाना था, so we had to wake up early. Suddenly I wake up and have this weird feeling कि मेरे पीछे कोई खड़ा है. खड़ा भी ऐसा है कि I was not able to, like, I wouldn't say I was not able to move my body or sleep paralysis हुआ है. I mean, I don't think so, because sleep paralysis में chest पे pressure पड़ता है and you hallucinate. I mean, sorry. So मुझे डर लग रहा था.
I cannot explain what I was going through at that time, but it was very intense. I was sweating. I was so afraid. I didn't even feel like, calling her. I mean, we were like a lot of people sleeping on the hall. It was not like I was alone. Huge hall, old house. सब फर्स्ट पे सो रहे हैं. I couldn't even turn around and say कि यार कुछ है करके. Then I closed my eyes and that moment I prayed कि अगर if this is the Chamundi, then please forgive me. I'll pay my respect tomorrow. Just give me a sign that you are not going to disturb me or harm me, whatever you're doing. Then I open my eyes और सामने खिड़की पे there's a काली बिल्ली sitting with green eyes, just staring back at me. It was not there a moment ago, and gives this very reassuring kind of a look, and then it goes, and then I sleep peacefully. I was able to turn, कुछ भी नहीं था, आराम से सोया. सुबह से उठा, मैं सीधा गया वहाँ पे, मैंने प्रे किया कि प्लीज एक्सेप्ट मी या व्हाटएवर. एंड उसके बाद जब भी मैं जाता हूँ, इनफैक्ट आजकल जब जाता हूँ ना, मैं ही जाता हूँ वहाँ पे. बाकी लोग कहते हैं क्या करेगा, छोड़ो ना. नहीं, मैं जाऊँगा. सो या दैट्स अ वेरी पर्सनल हॉन्टिंग एक्सपीरियंस. एंड फिर रिसेंटली वी हैड दिस भोग फॉर दैट चामुंडी. एंड भोग में तो आई मीन इवन रक्त का भोग भी होता है, बिकॉज इट्स अ चामुंडी, इट्स अ फियर स्पिरिट. ओके. एंड भोग में मुझे आई वॉज एबल टू गो इनसाइड दिस स्मॉल श्राइन वाला स्ट्रक्चर एंड ऑल, एंड I got to see 2 or 3 more stones, and I asked this relative who was the person convening everything. I asked him कि ये क्या है? I said these are 3 other pretas who have been placed here. They were the original landlords of this place. Then they passed away, so their spirits are venerated, and this has been there for a long time, like for centuries it has been there, even before we all came to live here. So that's how. I mean, that even gave me more goosebumps, but I was standing inside that small square structure with a roof. और roof में सारे चमगादड़ थे. Wow. I mean, it's an old place ना, वो साल में या 3 महीने में एक बार खुलता है. Right. या इवन अगर उसमें दीप जलता है तो वो महीने में एक बार संक्रमण के दिन जलता है, संक्रांति के दिन. तो so that was, I mean, it was a moment for me, like okay, I'm standing inside चामुंडी's स्थान, एंड वहाँ पे बाजू में ही 3 और ऐसे वो है प्रेत है, ओके, who are supposed to have lived more than 200 years ago. Yeah, that was something very personal, and I don't know, I was not scared at that time, but yeah. Yes. Does Mumbai have haunted places? I don't know. Why do you want me to talk about controversial things? No, because these are things which actually people also resonate, like being like born and brought up in Mumbai for me personally. So then you should be telling me. No? Like for example, जो अभी आरे का जो बोलते हैं. हाँ. So आरे का जहाँ तक मैंने सुना है, एक तो यही है कि that it's haunted. कोई लोग कहते हैं there are so many stories on the internet itself. ठीक है. Reddit पे there is a story which I read very recently. Even while I was researching for this book also, I got to know a lot of other versions as well. That क्या है? What क्या story? One of the versions is that there is this lady who appears with a child, and then she asks for a lift or something, and then when you stop, she disappears. That is something I've heard. There's another version that I think it's about somebody sitting inside the car or something. That's, I think I read it somewhere. Again, these are all versions. I have so my first job before I became a writer and screenwriter, my first job was in Powai. So that was my the first place where I lived in Bombay. So Powai mein, I think once I was traveling to Powai and I passed. I think the rickshaw wala took me. I don't remember kya hua tha, but I felt very cold in this particular stretch. क्योंकि वो थोड़ा open area था उस तरफ. So again, these are things that if people have experience, then only they can answer that. I wouldn't be the right person to talk about it. It could be possible that it's purely psychological because you are believing in it, and I will talk about something very important here. And as a horror writer, I should be actually marketing this, but I'll actually talk about something which is important. When I was growing up in Gurgaon, like I said, it was not the Millennium City as you see it today. The place where we lived, we took a house like बहुत दूर
जंगल नहीं मतलब झाड़ियों के बीच में लिया था, and that was like a new area which the it was developing. Yeah. So we had no roads or anything, proper roads नहीं थे, buses नहीं थे, and light ही नहीं था. आज तो आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है, बीकेसी से भी बेटर लगता है वो. And उस टाइम, this is almost 15 to 16 years back or 20 years back, my mom and dad, especially my mom and dad, when they used to come back from office, they had to take this particular road. Same kind of stories existed there. So apparently वहाँ पे ये पता चला कि it was not a ghost, it was actually a set of goons जो आपको बीच रास्ते में, क्योंकि स्पेशली विंटर के मौसम में या बरसात के मौसम में, one of them will dress up like this scary, वो साड़ी वाड़ी पहन के, and they'll stand in front of the lift मांगते हुए, या suddenly they will jump in front of your car and you will have to stop the car obviously. Right. And somebody will पीछे से 3-4 और लोग आ जाएंगे, वो सीधा मतलब आपका they try to take whatever they can from you. Right. Similar things have happened during the lockdown. अंडा फेंक देते हैं. Yes. Somebody appears in this scary apparition kind of appearance, and then वो अंडा फेंक देता है वाइपर पे, वाइपर लगाते हैं, वो खत्म, कुछ दिखाई नहीं देता. Then you have to stop the car, and then these guys will come, and so you have to be very careful. And especially if you are somebody who believes in hauntings and you believe that this particular road is haunted, you will be scared. Right. Otherwise, so if you are a rational person, you would actually not be scared for the ghost. I mean, you will not be scared. You will be scared because गुंडे मवाली हो सकते हैं, but भूत है करके आप नहीं डरोगे ना. Right. So that is what I'll suggest on this platform to whoever is out there who is thrilled by horror and ghosts and whatever. Always keep a scientific temperament. Always have this rational outlook. Otherwise, people will see your vulnerability and they can scam you. I think I'll end it on this note. Understand. Great. Thank you so much. I know people expect me to give a lot of mirch masala, but I like to give this warning to people. Yeah, because this is a very sensitive, because I've seen people who go on podcasts and say weird things, okay, and claim that it is true. Okay, I've seen people who are going on investigation and they are trying to communicate with the spirits or something, and they're talking to them in language which apparently the spirits cannot even talk, because, like, for example, I wouldn't even I mean, this was like somewhere, I don't remember where, कि इस रीजन में वो लोग जाके वो बात कर रहे थे स्पिरिट से, वो हिंदी में या किसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे. थिंग इज वो रीजन में हिंदी ही नहीं बोलते हैं, तो वो स्पिरिट हिंदी में कैसे बात कर रहे हैं. So yeah, these are the kind of things which are happening, so we should be very careful. Right. Yeah, and only scientific temperament can save you. Great. So a little bit थोड़ा practical भी होना चाहिए और थोड़ा पूरा practical, आप जैसे हो आप वैसे रहो. Especially you. Yeah. Thank you so much. Yeah, thank you so much. As usual, it's a pleasure always having you. And there's also a new book. Yes. That we should talk about. Absolutely. And it's called Dakini, and I hope you were able to read it. Yes, I read a little bit of it, but because I'm such a skeptic और मैं इतना so a skeptic should read this book. Okay. Because दिखने में horror है कि इसमें कुछ है वैसा. See, the word Dakini, the thing is, idea is, so a few years back when I was writing this book, I came across these news articles about witch hunt. Okay. Practices of witch hunt in Odisha. Right. And there's a witch hunt prevention act in Odisha, and then I came to know that there are similar acts in other parts of the country like Jharkhand, even in Rajasthan there are similar acts, and Assam mein hai. So this kind of the thing is, women from the lowest strata of the society, mostly widows, women who have been outcast, उनको witch का दर्जा दिया जाता है, and then they are hunted down and killed or hanged for their property. Right. इस तरह से. So I read these articles and I read about this activist who was trying to, and she passed away earlier this year, and Padma Shri awardee, and her works, because she was somebody who had to go through a similar trial, and I was reading about her works and I was very much A, inspired, and B, I was angered कि ऐसा भी होता है यहाँ पे हमारे देश में. We are very privileged, okay? I mean, in our own respects, और जो भी है हम privileged हैं,
There are a lot of people who have to live their life because they don't have any other options. So Dakini, I mean, this story is my anger when I was reading about those people. And the word Dayan, उसका अगर आप etymology देखोगे, it has roots in the word Dakini. Dayan, Dahini, again, I don't know if it's the correct pronunciation. Odisha में वैसे बोलते Dahin. So these are all words that have come from Dakini. I understand. So that's this book. It's a supernatural thriller. So those who are like, oh, मैं horror नहीं पढ़ता, don't worry. Horror है इसमें थोड़ा, but it's more about the horror that women face, at least in this particular book. So yeah, so that's my latest book. And just like Yakshini is a concept which is kind of misrepresented, Dakini is also a concept which is misrepresented. Great. All right, that's really good. I'm sure. Best of luck for Thank for this book, but I'm sure it'll be great. I've read a little bit of it, but I'll surely finish it. And then, otherwise, until next time, look forward Same here. to one more conversation. Thank you so much. Thank you.